Welcome back to my channel. This is Sumit and today's topic is non-metal. Let's see. आज हम जानेंगे non-metal कितने प्रकार के होते हैं. Liquid, solid and gaseous form में ये मिलते हैं हमें. If we talk about non-metals, then non-metals are those which lack all the metallic attributes. जो metals होते हैं उनके गुण non-metal में नहीं पाए जाते हैं. They are good insulators of heat and electricity. If we talk about solid non-metal, then heat and electricity will not travel from one end to another in solid non-metal. For example, rubber, paper, wood, stone, etc. Non-metals are mostly gases, and we all know that gases are bad conductor of heat and electricity, and some of them are solid at room temperature like carbon, sulfur and phosphorus. In non-metal, diamond, a mineral composed of pure carbon. It is the hardest natural occurring substances known. It is also the most popular gemstone because of their extreme hardness. And we all know that carbon is a chemical element. Carbon is the fourth most abundant chemical element in the universe. Here is some examples of non-metal. As you can see, rubber band, match box, books, wooden ruler, plastic spoon, straw, these all are non-metal. ये सारे non-metal carbon compound से बने होते हैं और ये bad conductor of heat and electricity होते हैं. I have already explained about these non-metals, diamond, carbon and sulfur and phosphorus. Here I have explained about electrical conductivity of metal and non-metal. We all know that metal allow the energy to pass through it very easily, whereas non-metal do not. Let's do an activity between electrical conductor and electrical insulator. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंपल सेटअप है जहाँ पे एक बल्ब लिया गया है, एक बैटरी लिया गया है और उसे वायर से कनेक्ट किया गया है और वन साइड ओपन सर्किट रखा गया है. तो उस ओपन सर्किट को वन बाय वन मेटल से क्लोज़ किया जा रहा है. जहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक स्टील का की है जिसे सर्किट को कंप्लीट किया गया है तो बल्ब ग्लो कर गया. इसका मतलब ये है कि वो जो की है वो मेटल का है और वो ईज़िली एनर्जी को अपने से पास होने दे रहा है. तो इस एक्टिविटी को हम लोग बाकी मेटल्स से करेंगे जो कि सिल्वर, गोल्ड और कॉपर है. और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सी वाटर यहाँ पे मेटल के साइड में क्यों लिया गया है और इससे इलेक्ट्रिकल बल्ब जो है वो ग्लो करेगा कि नहीं. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि सी वाटर से बल्ब क्यों ग्लो किया. आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. तो हम लोग सेम एक्टिविटी करेंगे नॉन मेटल के साथ, जहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि सेम सेटअप में नॉन मेटल को यूज़ किया गया है और बल्ब ग्लो नहीं किया गया है. जहाँ पे हम लोग ये जान पा रहे हैं कि नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. If we talk about metals, then mostly every metals are thermal conductor because in metals heat can travel from one end to another. Thermal conductor also depends on density of the metals, and we all know that metal has its own melting points. Metals with very low melting point is gallium. It melts almost instantly as you put on your palm, and metals with very high melting point is tungstens. Its melting point is 3422 degrees Celsius. Now we'll talk about non-metal. We all know that in non-metal heat will not travel from one end to other. Mostly all the non-metals are thermal insulator. For example, wood, foam glass, plastic handles. We all know that in non-metals heat do not travel from one end to another. Wires are covered with plastic which act as a good insulator. In kitchenware, most of the handles of utensils are made up of non-metals, for example, melamine plastics. Melamine is very poor conductor of heat and it resists fire. What is fire brigade uniform made of? Melamine is poor conductor of heat and it resists fire. However, melamine is used as a coating
on the uniform of firemen as they are flame resistance. It is also used in aeroplanes, buses, etc. to prevent the spread of fire. फायर ब्रिगेड्स के जो यूनिफॉर्म होते हैं वो सिंगल फैब्रिक से नहीं बने होते हैं। इस यूनिफॉर्म को बनाने के लिए और आग से बचे रहने के लिए एक से ज़्यादा फैब्रिक इंसुलेटर का यूज़ किया जाता है और इस पर मेलामाइन कोटिंग किया जाता है ताकि फ्लेम से बच सकें। इट इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फायर। दिस इज़ फायर ब्रिगेड यूनिफॉर्म्स। इस यूनिफॉर्म को बनाने के लिए तरह तरह के मटेरियल और फैब्रिक का यूज़ किया जाता है ताकि आग से फायरमैन अपने आप को बचा सके। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। थैंक यू।